Hello guys, welcome to Isha Garg Mathematics classes. Our motto, wipe the phobia of maths. Today we do chapter 1, real number, class 10th, introductory part. Real number. Real number is a collection of rational plus irrational. रियल नंबर्स वो नंबर जिनमें रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. बिटवीन टू रेशनल नंबर देर आर सो मैनी इरेशनल नंबर. बिटवीन टू इंटीजर्स देर आर सो मैनी रेशनल numbers. Okay, natural number, whole number, integers, rational, type of rational, irrational we already discussed in class 9. In class 10th real number we learn new things in which, that is now Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीजन लेमा. डिवीजन यू ऑल नो. अभी तक क्लास में आप सभी ने डिवीजन किया है न्यूमरल को न्यूमरल से. क्लास 9th में हमने डिवीजन किया पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से. सी हाउ. लेट वी टेक हियर 67 डिवाइडेड बाय 5. डिवाइड कीजिए 5 1 जा 5 1 7 5 3 जा 15. रिमाइंडर इज 2. 67 एज डिविडेंड, 5 एज डिवाइजर, 13 एज क्वोशिएंट, 2 as a remainder. When we justify it, it becomes dividend equals to divisor multiply quotient plus remainder. Dividend is equals to divisor multiply quotient plus remainder. Euclid division lemma. In Euclid division lemma, this dividend becomes a. This divisor means to say 5 becomes b. Quotient becomes q and remainder is r. 67 को आपने कैसे लिखा? 5 multiply 13 plus 2. Then in Euclid division lemma, there exist two positive integers q and r such that it satisfy a is equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b. See here remainder. Remainder is 2 that is less than 5. Now we define it. Euclid division lemma. Write down. Given two positive integers a and b, there exists unique integers q and r satisfying
A is equals to BQ plus R, where R is greater than or equals to 0 but less than B. It is called यूक्लिड डिवीजन लेमा. ये लेमा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात. A is equals to BQ plus R, where R is greater than or equals to 0 but less than B, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया है. ओके, लेमा, वी डिफाइन लेमा. लेमा is a proven statement. Lemma is a proven statement, is used to prove. Used for proving another statement. Lemma is a proven statement used for proving another statement. इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो ये लेमा है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है. वो क्या है? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन B. इसको हम यूज करेंगे स्टेटमेंट को और अलग से क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. अब वो हमें क्या प्रूव करना है? हमें HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. We have to find here, we have to find here HCF of numbers by using Euclid division lemma. In real numbers, new thing is that by Euclid division lemma, we find HCF. What is HCF? HCF is the highest common factor. HCF is the highest common factor. Okay guys, understood? In place of lemma, another word is used, that is algorithm. That is a algorithm. Algorithm is a series of well-defined steps which gives us procedure for solving a type of problem. Algorithm is a series of well-defined steps which gives us procedure for solving a type of problem. There is a little bit difference between lemma and algorithm. Lemma is a proven statement, that is A is equals to BQ plus R, where R is greater than or equals to 0 but less than B. And algorithm gives us a series of well-defined steps. Algorithm is a series of well-defined steps that gives us procedure, जो कि हमें प्रोसीजर देता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए.